Did you know, guys, what have I done here? I have given colors and shapes of the tattvas. Okay. A lot of people will think that the color of the earth element should be brown, जैसे मिट्टी का रंग होता है, but no, मिट्टी का रंग पीला होता है, याद रखना. It's yellow. It's yellow. It's not brown. It's not black. It's yellow. It is the color which is the color of a desert. आप दुबई में जाते हो ना, वहां पे जिस कलर का डेजर्ट है, lightish yellowish, that is the exact color of the mother earth. When we put water into it, it becomes little dark brown, but the actual color of the earth element is yellow, and the shape to enhance the earth element is square. Shapes to enhance east. Okay, so I'll just write down like north, just east, west, and south. Here in the east, you can also have either this kind of a shape or even this kind of a shape. Any vertical or horizontal bars in the form of tiles will also work. East में in the form of tiles. Okay, I can do certain arrows also. Can I do like this? Can I say this is a cycle of creation? The cycle of destruction. Is this one cycle of destruction? Yes, no? Is this another cycle of destruction? Yes, no? That's another one. That's another one. That's another one. With the cycle of destruction and the cycle of creation with colors. Suppose you have here in the north, and what you got? You have red color in the north. You have orange color in the north. You have dark yellow in the north. Dark yellow. You see? Look at the screen. Earth, Jala. Earth, Jala. Huh? Means you have dark yellow in the north. जब भी मैं नॉर्थ फेसिंग घर देखता हूं और वो पीले रंग से पेंट होता है ना, उस घर में अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं. मैं चाहता हूं कि नॉर्थ में पीला कलर ना हो. सीधी सी बात है.
डार्क येलो बिल्कुल भी नहीं. नॉर्थ शुड बी ब्लूइश, व्हाइटिश, एंड इट शुड हैव लेयर्स. जैसे लहरें होती है ना, ये देखो नॉर्थ का कैसा कलर, नॉर्थ का शेप कैसा है. दिस इज द शेप ऑफ द जल. I don't want a yellow. I don't want any square items in the north. Square. This is a square. I don't want any pyramids or triangular things in the north. These are going to weaken the north, isn't it? These are going to weaken the north. But suppose you have such things in the north. Suppose. And you cannot change them. सपोज करो कि जल इतना ज्यादा परेशान है और जल का फ्रेंड कौन है, और वो फ्रेंड अर्थ का भी होना चाहिए. फायर का छोड़ो, अभी हम सपोज यहाँ पे येलो कलर बहुत आ गया, तो येलो कलर का फ्रेंड कौन है? ये जो फ्रेंड है ना, ये बीच वाली जो चीज है, बैलेंसिंग चीज जो है, ये जल की भी फ्रेंड है और अर्थ की भी फ्रेंड है. कॉम्प्रोमाइज. तो आप यहां पर नॉर्थ में आप कहीं ना कहीं पे आकाश एलिमेंट भी ला सकते हैं उसको बैलेंस करने के लिए. सो यू कैन हैव सिल्वर काइंड ऑफ अ कलर, सिल्वर कर्टन्स. कर्टन्स का फायदा क्या होता है? कर्टन लहरों जैसे होते हैं ना, कर्टन्स आर लाइक लहरों जैसे. अगर ब्लू कर्टन्स आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. अगर सिल्वरिश कर्टन, पर्ल सिल्वरिश कर्टन आ जाए नॉर्थ में, तो आप ग्रे मेटल को भी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं. फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप मान लो अगर आप यहाँ पे नहीं ला सकते तो एटलीस्ट यू कैन बाय ग्रे और ब्लू पिलोज, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे एंड ब्लू. सोफे पे ग्रे एंड ब्लू पिलोज रख दो एटलीस्ट. वहां पर लाल रंग का, पीले रंग का सोफा मत रखो. बहुत से लोगों का नॉर्थ में ड्राइंग रूम होता है, ऑफिस होता है. ऑफिस में टेबल खरीदना है, चेयर खरीदनी है, हमने सिल्वरिश खरीदनी है. अगर आप ब्लू नहीं खरीद सकते, आपका शनि अच्छा नहीं है. शनि इज नॉट गुड. ट्राई टू हैव व्हाइट चेयर. इसको बोलते हैं बैलेंस करना. या तो वो खुद अपने आप को बैलेंस कर लो, वो चीजों को रेड, स्क्वायर, ट्रायंगल. आपने पिरामिड्स रखे हुए हैं, मैंने बोला आप पिरामिड्स लाओ घर पे. एक पिरामिड लेकर आए, आपने नॉर्थ में रख दिया. आपने ना चाहते हुए भी आप एनर्जी को, आप फायर को आप नॉर्थ में ले गए. शेप है ना, जो शेप ट्रायंगुलर शेप चीजें हैं, जैसे श्री यंत्र है ट्रायंगुलर शेप, जो आपने मेरे ऑफिस के सामने पड़ा हुआ है. इट्स वेरी हैवी, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो 50 की मतलब 30 का है. मेरे टेबल पे ही पड़ा है, राइट हैंड साइड पे, ब्रास का, बहुत बड़ा, बहुत हैवी. इट्स लाइक अ माउंटेन. इट्स लाइक अ माउंटेन. वो ट्रायंगुलर शेप है, लेकिन वो कहाँ पे पड़ा है? एग्जैक्टली यहीं पे पड़ा है जहां होना चाहिए. इसको एनहांस कर रहा है. What should not be there in the east? East facing home and painted in gray is going to destroy east. वो सिल्वर देखो, मेटल वुड को डिस्ट्रॉय कर रहा है. आकाश वुड को डिस्ट्रॉय कर रहा है. And you have that silverish grayish kind of a thing here. East facing home and a big silver gray painted gate, the main entrance. Problem. This is known as anti-direction. क्या कर सकते हो ऐसे सर्कमस्टांस में? ग्रे का जो फ्रेंड है वो अर्थ है, अर्थ एलिमेंट. लोग येलो कलर कर देते हैं. एयरवुड अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है. लेकिन इनका जो कॉमन फ्रेंड है वो जल है. ध्यान से देखिए. हु इज द कॉमन फ्रेंड बिटवीन आकाश, मेटल एंड वुड?
Who's the common friend? Common friend between gray and wood is jala. Common friend जो मेटल को रिड्यूस कर सकता है, इसके इफेक्ट को कम कर सकता है, वुड को अच्छा कर सकता है, वो जल है. ब्लूइश कलर, वेवरी थिंग्स. गेट है सिल्वर, हम उसको बोलते हैं कि उसमें कुछ ऐसा डिजाइन बनाइए कि ब्लू वेव्स आ जाएं उसमें. मे भी एक शीट लगा दीजिए, ब्लू वेव्स वाली शीट. बहुत से वर्टिकल हॉरिजॉन्टिकल गमले, पॉट्स, प्लांट पॉट्स आते हैं, रेक्टेंगुलर वर्टिकल लंबे लंबे खड़े हुए, बिल्कुल with this shape they come. Just put them. Lot of vertical or horizontal things in the east are good. In the east you should not have lot of white color. I'm sorry, no white color. White color zyada mat kariye east mein. You can have green color in the east, it is good. Lot of plants in the east, greenery in the east, it will help. If you have wavy kind of a things in the fire cone, you have blue color here, lot of blue, you have lot of black here. In this direction, it is going to ruin the fire element. आपका confidence, आपका पैसा, आपका cash flow. Properties तो होंगी, जेब में रुपया नहीं होगा. क्या करना है ऐसी property को? I have seen many people who have so much of acres of land, but they are missing in liquidity. There's no money with them. उनका फायर एलिमेंट खराब होता है, पक्का होता है, श्योर है. There's no doubt about it. जिसका फायर एलिमेंट स्ट्रांग है उसके पास 2-4 करोड़ कैश पड़ा होगा हमेशा. कम से कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होगा. लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ भी है. कभी पैसे का बिस्तर बना के सो के देखना, नींद आ ही जाती है. वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है. जितनी मर्जी टेंशन हो फिर भी नींद तो आ ही जाती है अगर बिस्तर पैसे का हो. Now you can say we'll see what happens in the morning. Now what should not be there, in the earth? First thing, big no in this direction is green color, because green is going to completely destroy this thing. जो इसको destroy करता है वो element नहीं होना चाहिए. But which is the common friend here? Fire. So you can bring some triangles here, you can bring some red color here, right? It is going to be fine. It is going to be fine. But do not have green color in this area. And if you have green color in this particular area, what is one thing that you are going to lose the most? You're going to lose the money, the outflow, the disposal is going to be a hit, and your relationships. Your skill area is going to take a major hit. You should not have red, orange in the west. Fire is going to destroy this thing. What will happen if you have a lot of red and orange in the west? Your gains
are going for a 6. Education of the children are going for a 6. There'll be tons of depression, tons of depression. If you have fire elements in the West. But then on the same time, the balancer is the earth. So you can have, some sort of square things in the West.